फ्रेंड्स मु रंजित OPSC ASO जनरल अवेयरनेस सिलेबस रो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग बेस्ट MCQs रो सेकंड पार्ट एबे आमे रिवीजन करिबा। तो चेष्टा करंतु प्रथम रु शेष जाय रही सब क्वेश्चन गुडी को अटेंड करि नियंतु। फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट रे आमे 50 क्वेश्चन रिवीजन करथिले, सेकंड पार्ट रे आमे 51 रु स्टार्ट करिबा। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कम अंडर, इजी क्वेश्चन हेगला। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कम अंडर का अंडर आसे फंडामेंटल राइट्स अंडर रे आसे। तो यार करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर ए। देखो तो ये रिवीजन पर्पज रे वीडियो करा जाउची, तो एथिरे बेसी किछि एक्सप्लेनेशन नाही। इफ एन इंडियन सिटीजन इज डिनाइड ए पब्लिक ऑफिस बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज डिनाइड टू हिम। तो पब्लिक ऑफिस रे जते बेले रिलीजन को देखा जाए, कास्ट को देखा जाए, सेते बेले से व्यक्तिर फंडामेंटल राइट कोटा माने हैम्पर हैला बोली आमे कहि परिबा। तो कौन हम? राइट ऑफ फ्रीडम नो, राइट टू इक्वालिटी। यार करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर बी। राइट टू इक्वालिटी को जाय लिखा जायछि आर्टिकल 16 रे। क्लियर। नेक्स्ट, फंडामेंटल फ्रीडम्स अंडर आर्टिकल 19 आर सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी कॉज्ड बाय। को टाइप रो इमरजेंसी टाइम रे फंडामेंटल फ्रीडम्स अंडर आर्टिकल 19 ताकू सस्पेंड करा जाए। फाइनेंशियल क्राइसिस नो, इंटरनल आर्म रिबेलियन नो, फेलर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मेशनरी ऑफ ए स्टेट नो। तो करेक्ट आंसर हम वार और एक्सटर्नल एग्रेशन। ठीक अच्छे। नेक्स्ट, द थ्योरी ऑफ फंडामेंटल राइट्स इम्प्लाइज, कहाँ पर इम्प्लाई करे? द थ्योरी ऑफ फंडामेंटल राइट्स सोवरेन ऑफ द पीपल नो, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल नो, लिमिटेड गवर्नमेंट। तो यार करेक्ट आंसर हम लिमिटेड गवर्नमेंट। क्लियर। ठीक अच्छे। नेक्स्ट, देखो वीडियो भल लगे ही लाइक शेयर कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। आ जदि किसी प्रोब्लेम लगुच देन कमेंट बॉक्स रे कमेंट करेंगे, मुझे निश्चित तार रिप्लाई निश्चित देवी। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन एटसेट्रा, आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो मेंशन अच्छी इज ए फंडामेंटल राइट क्लासिफाइबल अंडर, कहाँ अंडर क्लासिफाइबल अच्छी? एटा मधे इजी क्वेश्चन हो जाउची। द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन नो, द राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन नो, the cultural and educational right no, the right to equality, the right to equality, option number D will be correct answer. ठीक अछि। next, any dispute regarding the violation of fundamental rights can be presented, तो कोर्ट प्रेजेंट करा जाय परिबो? सुप्रीम कोर्ट ओनली नो, हाई कोर्ट ओनली नो, either in सुप्रीम कोर्ट और in the हाई कोर्ट। तो यार करेक्ट आंसर कोन हबो? either in the सुप्रीम कोर्ट और in the हाई कोर्ट। क्लियर। नेक्स्ट, the objective of fundamental rights in our constitution is to provide, objective कौन fundamental rights रो जोटा कि हम constitution रे अछि कौन से प्रोवाइड करे? better material condition to the citizens no, social justice no, equality and freedom to all citizens। तो यार करेक्ट आंसर कौन हबो? equality and freedom to all citizens। करेक्ट आंसर will be option number C। next, Indian constitution recognizes minorities on the basis of, माइनॉरिटीज मान को केमिति रिकॉग्नाइज करा जाए आम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिसाब रे? रिलीजन, कास्ट, पॉपुलेशन, कलर। तो यार करेक्ट आंसर हम रिलीजन हिसाब रे प्लस आउ केमिति लैंग्वेज सुनिथिबे लिंग्विस्टिक हिसाब रे। तो यार करेक्ट आंसर कौन हम? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, द फंडामेंटल राइट्स सिक्योर्ड टू द इंडिविजुअल आर, द फंडामेंटल राइट्स सिक्योर्ड टू द इंडिविजुअल आर लिमिटेड टू द स्टेट एक्शन ओनली। ठीक अच्छे। करे से मीन टू प्रोटेक्ट पर्सन्स अगेंस्ट द कंडक्ट ऑफ प्राइवेट पर्सन्स, ये मध्य ठीक अच्छे। मीन टू प्रोटेक्ट पर्सन्स अगेंस्ट द पुलिस एक्शन, ये मध्य ठीक अच्छे। तो गोटे व्यक्ति को आउ गोटे व्यक्ति किंबा कि जेकोसी प्राइवेट पर्सन प्रोब्लेम देला तो सी से जगह ता फंडामेंटल राइट को शो करि पारिबो। तार करेक्ट आंसर कोन होची? ऑल ऑफ द अबव। ठीक अच्छे। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, Article 14 guarantees equality before law and equal protection of law too. Article 14 बहुत important guarantees equality before law and equal protection of law too. को मानगु? All person living within the territory of India, all India citizens living in India, all person domiciled in India, all persons natural as well as artificial। एटा तो कौन लिखा है भूल? देखो ये प्रिसाइजली देखिए, ऑल पर्सन डोमिसाइल्ड इन इंडिया नो, ऑल इंडियन सिटीजन लिविंग इन इंडिया। ये जगह देखो लिविंग इन इंडिया लिखा जाए, ये जगह लिखा जाए ऑल पर्सन लिविंग विद इन द टेरिटोरी ऑफ इंडिया। माने गोटे फॉरेनर लोक जदि भी आसिला से इंडियन टेरिटोरी को जतले आसिला ताकू मध्य
आर्टिकल 14 द्वारा इक्वालिटी दिया जाई परिवो प्रोटेक्शन दिया जाई परिवो ठीक अछि किंतु ए जारे कोन लिखा जाय ऑल इंडियन सिटीजन्स लिविंग इन इंडिया नो तो बाहर जी आसीबो से कोन ताको मिलिबोनी मिलिबो तो एटा करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर ए ठीक अछि नेक्स्ट Article 16(4)(a) which gives power to the state to make laws regarding reservation in favor of scheduled caste and tribes was added by केते नंबर constitutional amendment रे ऐड करा जायतिला जे स्टेट मानको पाखरे पावर अछि टू मेक लॉज रिगार्डिंग रिजर्वेशन इन फेवर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब्स बहुत इजी अछि यार करेक्ट आंसर कोन होबा 77th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ठीक अछि नेक्स्ट अनटचेबिलिटी इज abolished and its practice is punishable according to को आर्टिकल रो अकॉर्डिंग रे अनटचेबिलिटी को एबोलिश करा जायछि आ यार प्रैक्टिस को पनिशेबल मध्ये घोषणा करा जायछि तो करेक्ट आंसर कोन होबो बहुत इजी अछि करेक्ट आंसर होबो आर्टिकल 17 ठीक अछि नेक्स्ट as far as armed forces are concerned the fundamental rights granted under article 14 and 19 of the constitution are as far as armed forces are concerned जेतला armed forces मान को कथा पड़े सेतले फंडामेंटल राइट्स जोटा कि 14 to 19 जोटा रहिला 14 and 19 कॉन्स्टिट्यूशन रे तार भूमिका कोन रहे 64 रे not available to all no available to armed forces but not to other forces भूल अछि available only at the discretion of the chief of army staff भूल available only according to law made by parliament correct answer होबो parliament available only according to law made by parliament ठीक अछि next right to education is a fundamental right emanating from right to education is a fundamental right ठीक अछि जानि छे emanating from को जारो एमिनेट है freedom of speech and expression under article 19(1)(a) no culture and education under article 29(30) no life and personal liberty under article 21 तो यार करेक्ट आंसर होबो life and personal liberty under article 21 तो यार करेक्ट आंसर होबो ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट according to article 23 the following are prohibited कोटा prohibited अछि जोटा कि article 23 accordingly traffic in human eta trafficking hobo trafficking human beings beggary slavery and bonded labor भूल अछि ठीक अछि 23rd रे आसुनी monopoly of trade 23rd रे आसुनी sales of incenses एटा मध्ये 23rd रे आसुनी भूल कहली कि 23rd रे आसुनी ना आसुची following are prohibited the following are prohibited माने कोड oh sorry according to article 23rd the following are prohibited कोटा prohibited अछि एडा न prohibited अछि एटा trafficking human beings beggary slavery and bonded labor ठीक अछि एटा होछि prohibited तो करेक्ट आंसर हबो ऑप्शन नंबर ए ठीक अछि आर्टिकल 22 relate to the fundamental right to life and personal liberty these rights are available to आर्टिकल 20 relate to fundamental right to life and personal liberty these rights are available to को मानको 20 जोटा कि 22 जोटा कि फंडामेंटल राइट्स मिले अवेलेबल रहे को मानको citizens and non-citizens natural persons as well as artificial persons citizens only all wrong correct answer होबो citizens and non-citizens ठीक अछि next which one of the following has been dropped from the list of personal freedom enshrined in article 19 of the constitution which one of the following has been dropped from the list of personal freedom enshrined in article 19 रो कोटा ड्रॉप कर दिया जायछि freedom to assemble peacefully without arms freedom to acquire hold and dispose of property तो ए जगह रे मने रखिबे प्रिसाइजली freedom to acquire hold dispose of property correct answer होबो ऑप्शन नंबर बी once the proclamation of emergency is made the right of a citizen to move to the supreme court for the enforcement of his fundamental right is suspended by the कहा द्वारा सस्पेंड हुए
बहुत इजी क्वेश्चन ओबियसली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को द्वारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को द्वारा नेक्स्ट अंडर आर्टिकल 368 पार्लियामेंट हैज नो पावर जो जगह क्वेश्चन बुझी पारना से जगह वीडियो पॉज करेंगे क्वेश्चन को निजे पढ़े 2-3 थर पढ़े निजे आंसर देवा लगी ट्राए करेंगे देन प्ले करेंगे अंडर आर्टिकल 368 पार्लियामेंट हैज नो पावर टू रिपील फंडामेंटल राइट्स बिकॉज दे आर बहुत इजी क्वेश्चन कौन पाई से माने किसी रिपील करि परिबे नहीं अंडर आर्टिकल 368 हिसाब रे एनश्राइंड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ह्यूमन राइट्स ट्रांसेंडेंटल राइट्स नो पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एसेंशियल फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रीजन होची केवल ऑप्शन नंबर डी पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एसेंशियल फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पई से माने किछि तार रिपील करि परिबे नाही नेक्स्ट Which of the following statement is or are not indicative of the difference between fundamental rights and directive principles? Not indicative. कहा जाए not indicative of difference between fundamental rights and directive principle. Not indicative कौन देखिबा directive principles are aimed to promoting social welfare while fundamental rights are the are for protecting individuals from state encroachment. ठीक कि भूल अच्छे इज नॉट इंडिकेटिव ये तो इंडिकेटिव होउची ये इंडिकेटिव होउची माने ये आंसर होबो नहीं फंडामेंटल राइट्स आर लिमिटेशंस ऑन स्टेट एक्शन व्हाइल डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस फॉर द गवर्नमेंट टू वर्क टुवर्ड्स ए जस्ट सोशियो इकोनॉमिक ऑर्डर ये मध्य इंडिकेटिव होउची माने ये भी आंसर होबो नहीं 1 और 2 कटिगला ना एथरे 1 और 2 कटिगला ये भी 2 अच्छी माने कटिगला ये भी 2 अच्छी माने आंसर हम 3 एंड 4 तो करेक्ट आंसर हम 3 एंड 4 ठीक अच्छे फंडामेंटल राइट्स वेर इंक्लूडेड इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वेर एडेड बाय द फर्स्ट अमेंडमेंट ठीक अच्छे जोटा कि नॉट इंडिकेटिव हिसाब रे फंडामेंटल राइट आर अमेंडेबल बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल कैन नॉट बी अमेंडेबल नॉट इंडिकेटिव तो यहाँ मध्य ठीक अच्छे तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 and 4 will be correct answer. Option number C will be correct answer. Regarding equality before law, the Indian Constitution makes exceptions in the case of कहा केस रे regarding equality before law exception देखा जाए आम कॉन्स्टिट्यूशन हिसाब रे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिसाब रे इजी अच्छी प्रेसिडेंट और गवर्नर को क्षेत्र में एक्सेप्शंस अच्छी समस्ते जानीचे हाँ कि नहीं नेक्स्ट सेंसरशिप of the press censorship of the press कौन censorship of the press is prohibited by the constitution no has to be judged by the test of reasonableness यार correct answer हबो has to be judged by the test of reasonableness clear next freedom of speech and expression are restricted in the constitution on grounds of freedom of speech and expression are restricted in the constitution on the grounds of को टाइम रे freedom of speech और expression को restriction करा जाए जदि डिफेमेशन हुए सेतेबेले रेस्ट्रिक्शन करा जाए ठीक अच्छी एक नंबरटा ठीक अच्छी तापरे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट विषय याडू साडू कहले सेतेबेले भी रेस्ट्रिक्ट करा जाए पारिबो देन 1 भी ठीक अच्छी 2 भी ठीक अच्छी प्रोटेक्टिंग ए शेड्यूल ट्राइब नो एई टाइम रे कोन पे रेस्ट्रिक्ट करा जिवो फ्रेंडली रिलेशंस विथ फॉरेन स्टेट एई टाइम रे मध्ये रेस्ट्रिक्शन करा जाय पारिबो तो 1 2 एंड 4 तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर डी ठीक अछि नेक्स्ट द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन प्रोहिबिट्स चिल्ड्रन द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन प्रोहिबिट्स चिल्ड्रन लास्ट पार्ट रे हमें जानी थिले बिलो 14 इयर्स ऑफ एज फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट इन फैमिली बिजनेस ही कैन माने से करि परिबो फैमिली बिजनेस रे 14 इयर रु कम पिला माने एज रो पिला बिलो 14 इयर्स ऑफ एज फ्रॉम बीइंग एम्प्लॉयड इन hazardous ऑक्युपेशन ए जगह रे प्रॉब्लम होबो तो hazardous जो जगह रे माने जो जगह रे विपदपूर्ण जगह रे से जगह रे 14 इयर्स रु कम पिला से जगह रे काम करि परिबे कि एम्प्लॉयमेंट माने एम्प्लॉयड हे परिबे नाही तो यार करेक्ट आंसर होबो ऑप्शन नंबर बी ठीक अछि Which of the following comes under right to equality? Quote I have to right to equality under रे आसे quote आसुची non discrimination by state on grounds of religion or race ठीक कि भूल ठीक अच्छे ये आसुची right to equality under रे
इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज ये मध्य राइट टू इक्वालिटी अंडर आसूची इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क एटा राइट टू इक्वालिटी अंडर आसुनी ये आसूची डीपीएसपी अंडर आसूची ठीक अच्छे तो 3 हेनी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अंडर द स्टेट ये मध्य आसूची राइट टू इक्वालिटी तो यार करेक्ट आंसर हम 1 2 4 तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर ठीक अच्छे नेक्स्ट Which of the following can impose reasonable restriction on the fundamental rights of the Indian citizens? Which of the following can impose reasonable restriction on the fundamental rights of the Indian citizens? Fundamental rights जोटा कि इंडियन सिटीजन मानक ऊपर से रेस्ट्रिक्ट करि परिबो सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट President on the advice of the Council of Ministers. None of these, the restrictions have already been included in the Constitution. The correct answer is Parliament. Parliament can impose reasonable restriction on the fundamental rights of the Indian citizens. ठीक अछि next. The right to constitutional remedies in India is available to. The right to constitutional remedies in India is available to. को माने को available अछि right to constitutional remedies citizens of India only. Citizens on India only of India only no all persons in case of infringement of any fundamental right तो यार करेक्ट आंसर हम all persons in case of infringement of any fundamental right जेकोसी फंडामेंटाल राइट जदि भंगा जीव कि ता ऊपर किसी आँच आसो देन समस्ते क्लेम करि पारिबे ठीक अच्छे नेक्स्ट Which of the following rights are available to Indian citizens as well as foreigners residing in Indian territory बहुत ही माने भलो क्वेश्चन एटा Which of the following rights are available to Indian citizens as well as foreigners residing in Indian territory Indian territory रे जो foreigners माने रहउछन्ती तांको ऊपर कोन कोन सब राइट्स तांको पाखरे अवेलेबल रहउची देखिबा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट फॉरेनर पाखे रहिबोनी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये रहिबो राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन बाय द स्टेट ऑन ग्राउंड ये रहिबो कि नहीं ना रहिबोनी राइट टू पर्सनल लिबर्टी ये मध्य रहिबो तो 2 नंबर एवं 4 नंबर होची 2 नंबर 4 नंबर कोटे अछि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट Which of the following factors do not explain why the rights included in part 3 of the constitution are called fundamental Which of the following factors do not explain कोटा explain करूनी why the rights included in part 3 of the constitution are called fundamental देखिबा कोटा एक्सप्लेन करूनी फंडामेंटल को दे आर इक्वली अवेलेबल टू सिटीजन्स एंड एलियंस ठीक अच्छे कि भूल अच्छे ठीक अच्छे जोटा कि एक्सप्लेन करूनी दे आर इक्वली अवेलेबल टू सिटीजन्स एंड एलियंस जोटा कि एक्सप्लेन करूनी माने एक्चुअली एटा भूल अच्छे बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस माने एटा गोटे पॉइंट दे आर सुपेरियर टू ऑर्डिनरी लॉ दे आर सुपेरियर टू ऑर्डिनरी लॉ जोटा कि एक्चुअली ठीक अच्छे किंतु नॉट एक्सप्लेन हेनी एटा एक्सप्लेन करुच्ची तो ये ठीक अच्छे किंतु ये आंसर हेनी गोटे आंसर हम 1 2टा तो हेनी दे आर फंडामेंटल फॉर गवर्निंग द कंट्री दे आर फंडामेंटल फॉर गवर्निंग द बॉडी ये मध्य जोटा कि एक्सप्लेन करूनी तो ये मध्य आंसर हम ठीक अच्छे 1 3 दे आर नॉट एब्सोल्यूट दे आर नॉट एब्सोल्यूट तो कौन हम दे आर नॉट एब्सोल्यूट ये मध्य जोटा कि एक्सप्लेन करू नाही तो करेक्ट आंसर हम 1 3 4 1 3 4 1 3 4 ऑप्शन नंबर सी ठीक अच्छे नेक्स्ट द फंडामेंटल राइट टू डैश हैज बीन डिलीटेड बाय द अमेंडमेंट एक्ट फंडामेंटल राइट कोटा जोटा कि डिलीट कर दिया जाए अमेंडमेंट एक्ट द्वारा तो करेक्ट आंसर कौन हम बहुत इजी अच्छे प्रॉपर्टी राइट टू प्रॉपर्टी 44th ठीक अच्छे राइट टू प्रॉपर्टी 44th अमेंडमेंट एक्ट रे ताको डिलीट कर दिया जाइए Which statement is or are not correct regarding the fundamental rights fundamental right regarding को statement correct नहीं some of these rights are not available to the armed forces correct अच्छी से कही कोटा correct नहीं एटा correct अच्छी they are automatically suspended when any emergency is proclaimed by the president automatically suspended हुए नहीं तो 2 गोटे आसीबो the president alone can decide upon modifying their application to the armed forces alone president alone
प्रेसिडेंट एलोन करि परिबे कि नहीं हाँ ये तो नॉट रिगार्डिंग व्हिच स्टेटमेंट इज और आर नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द फंडामेंटल राइट नॉट करेक्ट कोटा नॉट करेक्ट एटा तो करेक्ट अच्छी ये तो भूल अच्छी माने नॉट करेक्ट ये मध्य नॉट करेक्ट हम जेहेतु प्रेसिडेंट एलोन लिखा जाइए तापरे दे कैन नॉट बी अमेंड एज दे फॉर्म ए बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दे कैन नॉट बी अमेंड एज दे फॉर्म ए बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दे कैन नॉट बी अमेंड से अमेंड करि परिबे नहीं एटा तो ठीक अच्छी माने अमेंड करी दे कैन नॉट बी अमेंड ओ दे कैन अमेंड ना दे कैन अमेंड तो यार करेक्ट आंसर हम जोटा कि 2 हम गोटे 3 हम गोटे 4 हम गोटे 2 3 4 ऑप्शन बी तो यार करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर बी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल टू इंडियन सिटीजन्स बट नॉट टू एलियंस सिटीजन मानकु इंडियन सिटीजन मानकु अवेलेबल अच्छी फंडामेंटल राइट बट एलियन मानकु नुह माने फॉरेनर मानकु नुह कौन हम इक्वालिटी बिफोर लॉ अवेलेबल अच्छी ना नहीं कही नॉट टू एलियंस आर अवेलेबल टू इंडियन सिटीजनशिप बट नॉट टू एलियंस इक्वालिटी बिफोर लॉ अवेलेबल नहीं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच अवेलेबल अच्छी राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू कंजर्व देयर लैंग्वेज एंड कल्चर अवेलेबल अच्छी प्रोटेक्शन टू लाइफ एंड लिबर्टी अवेलेबल अच्छी प्रोटेक्शन टू लाइफ एंड लिबर्टी और नॉट टू एलियन एलियन मान पाखे अवेलेबल नहीं कोटा या भितर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच अवेलेबल नहीं सिटीजन बट नॉट एलियंस सॉरी ये क्वेश्चन जानी होनी आउ थे पढ़ा कौन एक्चुअली देछि क्वेश्चन रे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल टू इंडियन सिटीजन मान को अवेलेबल अच्छी बट नॉट टू एलियन मान को अवेलेबल नहीं कौन कौन अवेलेबल नहीं इक्वालिटी बिफोर लॉ अवेलेबल अच्छी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच अवेलेबल टू which of the following fundamental rights are available to Indian citizens but not aliens sorry अवेलेबल अच्छे इंडियन सिटीजन पाखे बट नाही का पाखे एलियंस मान पाखे नहीं तो यार करेक्ट आंसर कौन हम इक्वालिटी बिफोर लॉ नहीं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच अच्छी राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू कंजर्व देयर लैंग्वेज एंड कल्चर ये मध्य अच्छी तो 2 and 3 हम यार करेक्ट आंसर 2 and 3 कौन अच्छी हाँ ऑप्शन नंबर डी हम यार करेक्ट आंसर ठीक अच्छे नेक्स्ट मु एक्चुअली क्वेश्चन टा ही बुझी पार नथली ठीक अच्छे Who decides about the reasonableness of the restriction placed on fundamental rights? Who decides about the reasonableness of the restriction placed on fundamental rights? कौन हम यार करेक्ट आंसर ओबियसली पार्लियामेंट ही हम जे डिसाइड करे रिजनेबलनेस ऑफ द रेस्ट्रिक्शन प्लेस्ड ऑन फंडामेंटल राइट्स से जहाँ चाहिए से करि परिबो नेक्स्ट Which article of the Constitution of India says no child below the age of 14 years shall be employed to work in any factory or mine or engaged in any other hazardous employment? एटा ऑलरेडी हमें डिस्कशन कर जाचे को आर्टिकल मेंशन करा जाची तो करेक्ट आंसर हो आर्टिकल 24 नेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स The Article 20 of the Constitution of India lays down that no person shall be deprived of his and personal liberty except according to procedure established by law. एटा आर्टिकल 20 रे लिखा जाइए नो आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स दैट नो पर्सन कैन बी कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर द वायोलेशन ऑफ लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ कमिशन ऑफ द एक्ट चार्ज एज एन ऑफेंस एजारे देखो उल्टा लिखा जाइए 20 टा एजारे हवा कथा 21 टा से जारे हवा था तो जोड़ा को ही भूल अच्छी तो करेक्ट आंसर हम नन ऑफ द एबव ठीक अच्छे नेक्स्ट सेपरेशन ऑफ द जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इज एनजॉइंड बाय Separation of the judiciary from the executive is enjoined by कहा द्वारा obviously DPSP correct answer होगा DPSP next economic justice as one of the objectives of the Indian Constitution has been provided in the को जगह मेंशन अच्छी economic justice preamble and fundamental right no preamble and DPSP तो correct answer होगा option number B
Next, which article of the Constitution envisages free and compulsory education for children up to the age of 14 years? को आर्टिकल मेंशन करा जाइछि 19 तो राइट आर्टिकल 19 तो हबनी सॉरी आर्टिकल 29 भी हबनी आर्टिकल 32 भी हबनी तो एथरो जाना पड़ जाउछि आर्टिकल 45 ही हबो ठीक अछि नेक्स्ट व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी को पार्ट लिखा जाइछि करेक्ट आंसर हबो पार्ट 4 नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या तो कोटा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी रो पार्ट नुह जोटा कि या भीतर कोटा नुह to raise the level of nutrition to develop the scientific temper एटा नुह कौन पाई एटा फंडामेंटल ड्यूटीज रे आसुची क्लियर नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन गांधीयन आइडियोलॉजी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन गांधीयन आइडियोलॉजी कोटा इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन नो एटा हबनी यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल सिटीजन्स नो सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव नो प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री एटा मोस्ट इंपोर्टेंट ऑप्शन डी हबो यार करेक्ट आंसर नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी टर्म्ड गांधीयन अमंग द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स या भीतर कोटा कैन नॉट बी टर्म्ड गांधीयन अमंग द डायरेक्टिव प्रिंसिपल प्रिवेंशन ऑफ काउ स्लॉटर्स नुह एटा तो नुह कैन नॉट बी डिटरमाइंड कहि ना एटा डिटरमाइन करेनी गांधीयन डायरेक्टिव प्रिंसिपल को प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री ये तो करे माने जोटा कि गांधीयन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी टर्म गांधीयन ये गांधीयन टर्म हो पारिबो नाही ये भी गांधीयन टर्म हो पारिबो नाही एस्टैब्लिशमेंट ऑफ विलेज पंचायत हो पारिबो नाही यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑफ फॉर द कंट्री कही ना एमंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हिसाब रे यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द कंट्री हबो करेक्ट आंसर ठीक अछि नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर लिस्टेड एमंग द डायरेक्टिव प्रिंसिपल इन पार्ट 4 रे या थ्रू कोटा मेंशन अछि लिस्ट अछि डायरेक्टिव प्रिंसिपल इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क मेंशन अछि ना नहीं मेंशन अछि डीपीएसपी रे यूनिफॉर्म सिविल कोड मेंशन अच्छी स्मॉल फैमिली नॉर्म ना एजुकेशन थ्रू मदर टंग एट प्राइमरी लेवल नो तो करेक्ट आंसर हम 1 and 2 ऑप्शन बी हम यार करेक्ट आंसर ठीक अच्छे नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेर एडेड टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बाय अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेर एडेड टू द डीपीएसपी बाय अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन कोड ऐड करा जाइए टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड सेफगार्ड वाइल्ड लाइफ ऐड करा ना नहीं yes right to workers to participate in management of industry ये तो ऐड करा है नहीं बोधे ना ऐड करा है ना ये ऐड करा है right of workers to participate in management of industry right to work नहीं to protect and maintain places of historic interest नहीं तो यार करेक्ट आंसर हो 1 and 2 ठीक है नेक्स्ट which of the following directive principle of state policy has not been implemented so far which of the following directive principle of state policy DPSP has not been implemented so far कोटा से करें implement separation of judiciary from executive promotion of international peace and security uniform civil code for the citizens तार करेक्ट आंसर कौन हम यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स जोटा कि एपर्यंत इम्प्लीमेंट हैनी नेक्स्ट टू ऑब्जेक्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एम्स एट कौन एम्स करे ऑब्जेक्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एम्स एट embodiment of the concept of a welfare state legislature and judiciary supremacy of executive embodiment of multifarious concept of judicial activism parliament is supreme body unanswerable to any authority तार करेक्ट आंसर हम embodiment of the concept of a welfare state legislature and judiciary ठीक अच्छे तीनटा पिलर अच्छी आम कंट्री आमर जो कॉन्स्टिट्यूशन तीनटा पिलर अच्छी गोटे है लेजिस्लेचर गोटे है जुडिशियरी आ गोटे है एग्जीक्यूटिव ठीक अच्छे नेक्स्ट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर ऑप्शन भर कोटा एप्रोप्रिएट जस्टिफिएबल एज फंडामेंटल राइट्स जस्टिफिएबल बट नॉट एज फंडामेंटल राइट
decorative portions of Indian constitution not justifiable yet fundamental in governance of the country. Correct answer of option number D, not justifiable but mane yet fundamental in governance of the country. Next, fundamental duties enacted in part 4A of the constitution are. Fundamental duties enacted in part 4A of the constitution are कौन फंडामेंटल ड्यूटीज एनाक्टेड कौन करुच्ची एनफोर्सेबल ड्यूटीज एंड पार्लियामेंट कैन इम्पोज पेनाल्टीज और punishment for the non-compliance. Wrong. Like directive principles that are mandate to people. No. Like fundamental rights that are enforceable. No. No more than mean to create psychological consciousness among the citizen and of education value. Yes. No more than mean to create psychological consciousness among the citizens and of education value. The correct answer will be option number D. ठीक है. This is part 2 finished. Next time we will come with part number 3. So thank you.